Truck drivers are staging protests in Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Haryana and Uttar Pradesh against the revamped law against drivers who flee and don't report fatal accidents. Now, under the new law, as described in the Bharatiya Nyaya Sanhita, the punishment is a jail term of up to 10 years. Under the IPC, which has now been replaced by these new laws, the punishment was up to a 2-year jail term for causing death by negligence. Now, the country's largest truckers' body, the All India Motor Transport Congress, also known as the AIMTC, had last week written to the Prime Minister and the Home Minister flagging off the trend of police usually putting the blame of crashes on big vehicles without any scientific investigation. Meanwhile, long queues are being seen at petrol pumps as the supply of petrol and diesel is getting heavily impacted by these trucker protests, and supply chains are also likely to be impacted further if the protests continue for a longer period of time. इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन और ट्रक यूनियन जितने भी हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात कहीं भी हो, सभी ने मिलके 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक ट्रकों को खड़ा करने का निर्णय लिया है। और जो भाजपा सरकार ने एक कानून बनाया है कि अगर ड्राइवर एक्सीडेंट करके भागता है तो उसको 10 साल की सज़ा और लाखों रुपए का जुर्माना होगा। और इस वजह से सभी ट्रक ड्राइवर गाड़ियां छोड़कर घर को चले गए हैं। सभी गाड़ियां खड़ी हैं, कोई भी ड्राइवर आज ट्रक चलाने को सहमत नहीं हुआ और हमने सब आज पुकार भी बंद रखी और गाड़ियां खड़ी हैं हमारी। ऑटो का देखिए ऐसा है जैसे सरकार की मंशा चल रही है। हम सब ड्राइवर भाई हैं, हमारा एक ही काम बनता है। देखिए पब्लिक सेवा के लिए हम सब सुबह से लेकर शाम तक सबको पब्लिक सेवा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार अपनी मंशा से दूर नहीं हट रही है। इतनी धुंध कोहरे में कोई ना कोई एक्सीडेंट, देखिए कोई भी ड्राइवर है एक चीटी भी मार के राजी नहीं है, मगर अनजाने में कोई ना कोई गलती हो ही जाती किसी से। मगर ये 10 साल की सजा और ये जुर्माना जो किया ये सरासर गलत है। हम सब ऑटो ड्राइवर और हरियाणा ऑटो जितने भी ड्राइवर भाई देखिए आप उस साइड में, हम सब इसके खिलाफ में रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की 48 लिए की है मैंने। जो ये काला कानून है ना, ये रुकना चाहिए। हमारी तरफ से हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है, इसको वापसी लो। और करीब जिंदगी बस 150 बस हैं, ड्राइवर के साथ ड्राइवर कनेक्टर सभी सहमत हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। इसी की वजह से खड़ी कर रखी है हमने। इसी की वजह से आज हमारा को नुकसान भी है, लाभ भी है इसमें। And amid protests in Maharashtra, the government has requested the police to ensure an uninterrupted supply of fuel in the market. The Maharashtra Food, Civil and Supply Consumer Protection Department has written to all police commissioners and superintendents expressing concern over the protest and its effect on the supply of petrol, diesel and LPG cylinders. Meanwhile, the School Bus Association of the state has cautioned that their buses are only running on certain routes until the time that they have fuel to run their operations owing to the scarcity of diesel. मैं अनिल गर्ग, स्कूल बस ओनर प्रेसिडेंट महाराष्ट्र। अभी सुबह कुछ स्कूल आज से चालू हुए हैं, तो स्कूल बसेस वहाँ गई है। जो डीजल बचा था, अभी 8 दिन स्कूल बंद थे तो डीजल वगैरह कुछ डाला नहीं था। आज सुबह अभी गाड़ी तो चली है, 1-2 लाइन होगी, और जब तक डीजल नहीं आएगा तो फिर बसें सब बंद हो जाएंगी। अभी विरार, वसई वगैरह सब स्कूल चालू हुए हैं और पौधा स्कूल भी सब चालू है, तो वहाँ डीजल है ऑलरेडी। तो जब तक गाड़ियाँ चलेगी, अब डीजल नहीं मिलेगा दोपहर के बाद या जो भी होगा, तो फिर स्कूल बसें भी बंद हो जाएंगी। तो ये सूचना हम सब स्कूल को भी दिए हैं और पेरेंट्स को भी व्हाट्सएप मैसेज में हम लोग भेज देंगे। गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी स्कूल बस के लिए डीजल का प्राप्ति करना बहुत ज़रूरी है, तो ये निर्णय लेके दोपहर तक हमको बताएं। We're crossing over to my colleague Shrishti, who joins us now to get us more details on what's taking place across the country when it comes to these trucker protests. Shrishti, considering that there's mounting pressure on the centre, do you think it's likely to in any way impact the new laws that have just come into place? Well, if we talk about this new criminal laws which has been put out by the central government, now what it says is that regarding the hit and run law is that the earlier imprisonment for the truck drivers if they flee from the accident spot, basically earlier it used to be 2 years,
and now it has been extended to 10 years. Now, what truck drivers' side on this is particular is that they are mentioning that if they don't flee from the particular accident site, then the people around the accident spot tries to, beat them out. That's why they flee from the location. However, nobody wants to intentionally do the particular accident. Now, with this demands and with this act which has been imposed by, which has been taken up by the central government, the truck drivers across country are protesting. Now, its repercussions, now its effects are seen on the streets of Mumbai as well as Maharashtra. Now, the truck drivers are on strike, so definitely the supply of goods, petrol, diesel is on hold. And long queues are being seen in the different locations, different districts, whether it be Nagpur, Nashik. Absolutely. Shrishti, thank you so much for joining us and bringing us those details.